हेलो एवरीवन। मैं हूं मुसरफिर सियाम, लाहौर पाकिस्तान से। और आज मुझे टोरंटो कनाडा से अनम जाकरी ने ज्वाइन किया है अपनी किताब 1971 अ पीपल्स हिस्ट्री फ्रॉम बांग्लादेश पाकिस्तान एंड इंडिया को डिस्कस करने के लिए। अनम जाकरिया इज अ टोरंटो बेस्ड पाकिस्तानी ऑथर और हिस्टोरियन एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल। शी frequently writes for the Dawn, the New York Times and the Hill Times. Thank you so much, Anam Zakaria, for joining me. Thank you so much for having me. ओके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी मोटिवेशन क्या थी इस किताब के पीछे। आई मीन पार्टिकुलरली टू फोकस ऑन द इवेंट्स ऑफ 1971 और फिर उसके जो असरात थे लोगों की याददाश्त के ऊपर। और उसके अलावा हाउ डू यू सी आर असेस दिस अप्रोच, आई मीन अप्रोच ऑफ पीपल्स हिस्ट्री, कि ये किस तरह से डिफरेंट है जो दूसरी एकेडमिक हिस्ट्री है या एकेडमिक हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैं उनसे। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये जो किताब है आई थिंक ये इंस्पायर हुई थी बाय द साइलेंस, जो खामोशी है पाकिस्तान में 1971 को लेके। ग्रोइंग अप मैं पंजाब में बड़ी हुई, लाहौर में बड़ी हुई, और जो किताबों में हमारा लिखा होता है 1971 के बारे में वो कुछ लाइनों में ख़त्म हो जाता है। एक चैप्टर भी नहीं आप उसको कह सकते। फ्यू पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, देन यू मूव ऑन। तो ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था 1971 के बारे में ग्रोइंग अप, ना ज़्यादा सुना उसके बारे में। बट जब मैंने अपना काम शुरू किया ओरल हिस्ट्रीज पे, 1947 पार्टीशन पे मैं फोकस कर रही थी। उस वक्त आई थिंक मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि जो पाकिस्तान में नैरेटिव है पार्टीशन के बारे में वो इंडिया से बहुत मुख्तलिफ है। पार्टीशन में पाकिस्तान में और विक्ट्री भी है कि पार्टीशन के जो सैक्रिफाइसेस किए लोगों ने पार्टीशन के लिए, उसके बाद हमें एक मुल्क मिला। बट इंडिया में जो नैरेटिव है वो नैरेटिव ऑफ लॉस है, ऑफ ब्रेकअप ऑफ मदरलैंड है। सो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि 1971 के बारे में जब हम पाकिस्तान में सोचते हैं या बात करते हैं तो देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस। हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो डिसमेंबरमेंट है, सेपरेशन है, सेसेशन है, मगर बांग्लादेश में इसको लिबरेशन कहा जाता है। सो दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट इंटरेस्टेड कि बांग्लादेश में नैरेटिव क्या है और पाकिस्तान से किस तरह मुख्तलिफ है। बट देन जब मैं ये इंटरव्यूज कर रही थी पार्टीशन जनरेशन के, तो उसमें ऑफन टाइम 71 की भी बात होती थी। एंड आई थिंक इट वाज वेरी ऑब्वियस कि जो स्टेट हिस्ट्री या कन्वेंशनल टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ते हैं, जो लोगों की रियलिटी है या यादाश्त है उससे मुख्तलिफ है, उसमें एक नुआंस है, उसमें एक कम्प्लेक्सिटी है। सो फॉर एग्जाम्पल इन ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज में फॉर द फर्स्ट टाइम लोग मेंशन कर रहे थे, कुछ लोग इनमें से आर्मी में काम करते थे, कि हमने जो बंगालियों के साथ किया या जिस तरह हम उनको ट्रीट करते थे, जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते थे, जो डिरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, जो तरीका था हमारा, वो बहुत पहले से शुरू हो चुका था 1971 से, बहुत पहले से। सो दैट वाज काइंड ऑफ sparked my curiosity कि I've grown up with the silencing around 1971, मगर अगर मैं ओरल हिस्ट्रीज पे फोकस करूं तो शायद कुछ और सामने आ सकता है। और अगर मैं बांग्लादेश जाऊं तो उनकी जो नेशनल हिस्ट्री है और जो पीपल्स हिस्ट्री है दोनों पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ होंगी। सो आपका जो दूसरा सवाल था कि ओरल हिस्ट्रीज एकेडमिक हिस्ट्री से किस तरह डिफर करती हैं, आई थिंक ओरल हिस्ट्री की जो पावर है कि वो हमें जो मेटा इवेंट्स हैं, मैक्रो इवेंट्स हैं, उनके जो असरात होते हैं लोगों की जिंदगी पे, उस उस उसमें हमें एक लेंस मिलती है, एक ग्लिम्स मिलता है, एक इंसाइट मिलती है। एंड वो हिस्ट्रीज जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो नुआंस्ड होती हैं, वो वेरिड होती हैं। सो व्हाट डज इट मीन टू बी अ वुमन लिविंग इन वॉर, राइट? सेक्सुअल वायलेंस हुई फॉर एग्जांपल, या व्हाट डज इट मीन इफ यू आर अ पंजाबी बांग्लादेशी, राइट? एग्जैक्टली। व्हाट डज इट मीन अगर आप पाकिस्तान में जो वॉर पॉलिसी है उसको क्रिटिक कर रहे हो। सो वो जो आपको नुआंस मिलेगा, जो माइक्रो हिस्ट्रीज मिलेंगी, आई थिंक वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आपको नहीं मिलती। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आपको ज़्यादा एनालिसिस मिलता है, बट आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि लोगों का जो लिव्ड एक्सपीरियंस था वो मैं सामने लेके आऊँ, बिकॉज जब मैं वो स्टोरी सुन रही थी दे वर वेरी इम्पैक्टफुल फॉर मी, सो आई वांटेड टू शेयर दोस। ओके। अच्छा, जिस माइक्रो हिस्ट्री का आपने अभी जिक्र भी किया, स्टेट सैंक्शनड और जो दूसरे ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, उन्होंने आपकी रिसर्च के मुताबिक किस तरह से इम्पैक्ट किया या इन्फ्लुएंस किया जो लोगों की मेमोरीज थी या उनकी जो यादाश्त थी या जो उनकी स्टोरीज थी अबाउट दोज इवेंट्स ऑफ 1971? That's a great question because I think जब मैंने oral histories पे काम करना शुरू किया था तो I would also look at them in this way कि एक state history होती है और एक people's history होती है, एक दूसरे से अलग है या insulated है, मगर अगर असल में इस तरह नहीं होता।
अगर आप थोड़ा सा डीपर जाएं तो आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, राइट। सो जो स्टेट हिस्ट्री है वो पीपल्स मेमोरी को इम्पैक्ट करती है। ओवर टाइम जब आप बार 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 एक ही नैरेटिव सुनते हैं तो लोगों की जो मेमोरी है वो मैल्यूबल होती है, हमारी जो मेमोरी है वो फिक्स नहीं होती, राइट। वो चेंज भी होती है, वो डाइल्यूट भी होती है, वो शेप और रीशेप भी होती है। सो आई डेफिनेटली थिंक कि जो स्टेट हिस्ट्रीज हैं उनका पीपल्स मेमोरी पे एक इम्पैक्ट होता है। बट आई ऑल्सो थिंक कि जो स्टेट हिस्ट्रीज हैं वो लोगों की याददाश्त को सिलेक्टिवली अप्रोप्रिएट करती हैं और वेपनाइज करती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। जब हम पाकिस्तान में वायलेंस की बात करते हैं 1971 को लेके तो हम सिर्फ उसी हिस्ट्री को पे फोकस करते हैं, हम वो लोगों की जो रियल स्टोरीज हैं, रियल सफरिंग है उसको अप्रोप्रिएट करते हैं, वेपनाइज करते हैं, सिलेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं, राइट। सो एक तो स्टेट इस्तेमाल करती है ओरल हिस्ट्रीज को, बट देन आई ऑल्सो थिंक कि ओरल हिस्ट्री की जो एक पावर है वो ये है कि इम्पैक्ट तो होती है वो स्टेट हिस्ट्री से, मगर वो रेजिस्ट भी करती है स्टेट हिस्ट्री को। सो यू विल फाइंड नैरेटिव्स इन दिस बुक, मैंने तो थोड़ा सा लिमिटेड काम किया, इस पे फर्दर एक्सपेंशन बिल्कुल हो सकती है। बट देयर वाज अ रेजिस्टेंस मूवमेंट इन पाकिस्तान, इंटेलेक्चुअल्स थे, एक्टिविस्ट थे, पोइट्स थे, a lot of women were involved in this resistance। तो जब आप उनके साथ बैठते हैं उनकी जो याददाश्त है वो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस के तौर पे पेश आती है, और वो चैलेंज करती है स्टेट साइलेंसिंग को और स्टेट की जो सिलेक्टिव रिमेम्बरेंस है उसको भी। Okay, Acha, how it was difficult to, I mean, write this book or to conduct conversations you did for this book. I mean, being Pakistani, because when it comes to 1971, this is very sensitive. I mean, that was very sensitive which happened in 1971 back. So, किस तरह से ये मुश्किल था? I mean, to travel in Bangladesh and then to engage in conversations, particularly वो लोग जो जिनके लिए सारा कुछ हार्श था, मुश्किल था, जिन्होंने फेस किया, ये किस तरह से मुश्किल था और वहां पे आपने व्हाट डिड यू फील एक्चुअली? It was the most difficult research that I've done to date, और मैंने इससे पहले भी वायलेंस पे काम किया है, पार्टीशन पे काम किया है, कश्मीर पे काम किया है, वो भी बहुत मुश्किल रिसर्च थी फॉर डिफरेंट रीजन, जो ट्रॉमा स्टोरीज है उसको लेके। बट बांग्लादेश में जो मैंने रिसर्च की, इट वाज वेरी चैलेंजिंग ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट लेवल्स। पहली बात तो ये थी कि मेरी एक नाइविटी थी जब मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। मैं कहीं ना कहीं आई थिंक इम्पैक्ट हो चुकी थी स्टेट के नैरेटिव से भी, कि जब हम बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो भाई भाई हैं, मुस्लिम कंट्री है। हम इंडिया के बारे में एक और तरीके से बात करते हैं। क्योंकि मैं इंडिया में रिसर्च कर चुकी थी तो मुझे लगा बांग्लादेश तो इसके निस्बत आसान होगा जाना, बट आई वाज वेरी रॉन्ग एंड आई थिंक नाउ आई अंडरस्टैंड मच बेटर कि जो दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप है बहुत कंटेंशियस है, और क्यों कंटेंशियस है एंड इंक्रीजिंगली कंटेंशियस है। सो पहली बात तो ये थी कि मुझे वीज़ा ही नहीं मिल रहा था जाने के लिए। इनिशियली मैंने जो प्रोजेक्ट सोचा था उसके लिए मैंने सोचा था मैं बार बार बांग्लादेश जाऊंगी, काफ़ी टाइम उधर स्पेंड करूंगी, बट इवेंचुअली दैट वाज नॉट पॉसिबल। मुझे एक लिमिटेड टाइम के लिए बहुत मुश्किल से वीज़ा मिला। सो बट वंस आई वेंट देयर, वंस आई वाज एक्चुअली देयर इन दैट लिमिटेड टाइम, मैं चाह रही थी कि मैं लोगों से बात करूं, बट आई वाज आल्सो वेरी अवेयर कि मेरी जो पाकिस्तानी आइडेंटिटी है और जो पोजिशनैलिटी है, आई एम पंजाबी, my father did serve in the army, so all of those aspects of my identity uh, are are going to be very present in the room। और मैं बांग्लादेश किसी और चीज के बारे में रिसर्च करने नहीं जा रही, मैं 1971 जा रही हूँ। जेनोसाइड ऑन बंगाली पीपल, उसकी वजह से एक एक्सट्रीम डिस्ट्रस्ट है, राइट। और काफ़ी जो किताबें पाकिस्तान के नज़रिए से लिखी जाती हैं बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं और डिस्टॉर्टेड होती हैं। सो आई थिंक टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट was the most difficult and challenging aspect of this work। and I think काफ़ी लोगों ने सिर्फ इसलिए मुझसे बात की क्योंकि जो हमें कनेक्ट कर रहे थे, जो लोग हमें कनेक्ट कर रहे थे वो उनको ट्रस्ट करते थे, राइट। तो उन उनको ट्रस्ट करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएं, आप बात कर लें। फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछे जब उनको आई थिंक आइडिया हुआ कि जो मेरा नज़रिया है इस किताब में वो स्टेट सैंक्शन नहीं है, बट आई एम रियली देयर टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंसेस। सो देन देयर वाज एन ओपननेस दैट हैपेंड। काफ़ी लोग मुझसे बात करना है क्योंकि वो कभी उन्होंने किसी पाकिस्तानी से बात नहीं की थी, एंड दे फेल्ट लाइक इट वाज देयर ड्यूटी टू शेयर कि मैं स्टोरीज वापस लेके जाऊँ। सो वो एक प्रोसेस था, बट देन ऑल्सो द शेयर ट्रॉमा as you mentioned that people have experienced,
it was very difficult to hear those stories and for people to retell those stories. And especially जब मैं compare करती हूँ पाकिस्तान में जो silencing है, so this remembrance was very powerful, was very haunting, and it had a huge impact. There were many nights that I could not sleep after hearing these stories, and they continue to have a very deep impact on me. चैलेंजेस का तो आपने जिक्र किया है, तो प्लीज टेल अस एनी स्टोरी, कोई ऐसी स्टोरी जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल आप जो कर रही हो उसको करते हुए, ऐसी कन्वर्सेशन जब उसको आप कवर कर रही हो। I'll just come to that question. I think one thing I want to add to your previous question is also the ethics of doing this work. I think वो काफी navigate करना बहुत important होता है, especially जब आप Yes. old history से trauma memories के साथ काम कर रहे हो। तो मैंने intentionally I had to be very conscious कि मैं बहुत limited time के लिए इधर हूँ, और मैं लोगों के साथ relationship तो initiate कर सकती हूँ, but मैं follow ups उस तरह नहीं कर सकती. I can't be here to make sure they're okay afterwards. तो जहाँ पे लोग आके मुझसे बात करना चाह रहे थे, I chose to speak to them. I did not actively go and try to break silence in that sense. And I know कि काफी ऐसी जो हुई उस पे काम होना चाहिए, but I did not feel like that was my job, given that I was there for a very limited period of time, कि मैं किसी को जिसने अभी तक स्टोरी अपनी शेयर नहीं की मैं कहूँ कि नहीं आप मेरे साथ शेयर करें, if you don't, even if you're hesitant, and share with the Pakistani, right? So I had to be very careful about the ethics of doing this work as well, and I think we need to talk about that more when it comes to oral histories. But in terms of your next question, I think it's very hard for me to pick one story, but I think there's so many and so many different ways that impacted me. But I think एक जो story थी जो किताब में है, it was about a gentleman that I met who was a young student at the time of 1971. वो कुछ देर लाहौर में भी उन्होंने अपनी education की, उसके बाद वो वापस गए, and वो स्टूडेंट एक्टिविज्म में इन्वॉल्व हुए. उनके जो फादर थे उस वक्त तक वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तो एक टेंशन भी थी बाप और बेटे में, until March 1971 when that violence was unescapable for the elder generation too. And उन्होंने मुझे कहा कि मैंने मुक्ति वाहिनी ज्वाइन कर ली, पर उनका जो मुक्ति वाहिनी में रोल था वो था एज अ म्यूजिशियन. And I think that was very surprising. It took, it made me pause, I guess. Because हम जब मुक्ति वाहिनी के बारे में बात करते हैं तो टेररिज्म का अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं. It's seen as an Indian-backed movement, and of course, there was a presence in India, and India was involved in the war. I'm not denying that at all, but I think it was very important for me to see that Mukti Bahini एक people's resistance movement भी थी, and उसमें, there were different forms and ways that people got involved. And so this was somebody who would actually go to the camps where people were seeking refuge and try to lift up their spirits through music. So I think there were those kinds of interviews that I did that really challenged जो preconceived notions थी through which I was kind of going in, the kind of stories, the status narratives that I had heard about in Pakistan. जब हम कश्मीर की resistance movement की बात करते हैं तो हमारा एक बहुत different stance होता है. We understand why Pakistan supports, but जब हम बंगालियों की resistance movement, people's movement के बारे में बात करते हैं तो it is seen as something treacherous. It is seen as something anti-state. But we also have to understand जब लोगों पे तशद्दुद होता है, then they have every right, to struggle for the self-determination. Exactly. ओके, जो 1971 की लेगेसी है वो कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स को, इन तीनों कंट्रीज के जो आपस में रिलेशनशिप है, आपके ख्याल में किस तरह से इम्पेक्ट कर रही है? I think 1971 बहुत defining year है, जिसके बारे में हम I think इस पे फोकस नहीं करते इतना ज़्यादा. But 1971 के बाद हमारी for example टेक्स्ट बुक्स रिवाइज हुई पाकिस्तान में, और जो एक एंटी हिंदू स्लान था and further Islamization थी of for the cause of rebuilding national integrity after you have lost so much territory. And हम उसको territory के perspective से ही देखते हैं, हम उसको the loss of people and culture नहीं देखते unfortunately. But from that prism कि we have lost territory, there was a sense in the national project that we have to rebuild and reinstill pride in the nation. And so your textbooks get more Islamicized. आपका जो anti
हिंदू फर्वर है वो हाइटन होता है, एंटी इंडिया फर्वर है वो हाइटन होता है, आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक्सेलरेट होता है, और आपकी जो कश्मीर में पॉलिसीज हैं इंडिया पाकिस्तान की आज, वो काफ़ी हद तक शेप होती हैं फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन 1971। पाकिस्तान के नज़रिए से 1971 was India taking revenge for 1947, and then Pakistan's policies in Kashmir, a lot of analysts have talked about this, are influenced by India's policies in what was then East Pakistan, present day Bangladesh. So I think that there's a huge impact on our policy. हमारा जो एक lesson भी था, बहुत unfortunate I would say lesson, वो ये था कि never again. But not never again in terms of we will never unleash this kind of violence on people. Never again will we unleash these kinds of systemic, discriminatory, racist policies on people. But never again in terms of the military will never be weak again. Right, military might. So I think वो shape करती है बहुत ज़्यादा अभी तक पाकिस्तान की internal policies and politics, as well as their relationships with the regional partners. And I also think that India, maybe 1971 has been very, very poignant. It kind of established India as its regional superpower. And वो जो victory है वो register होती है in terms of victory over Pakistan. And इसमें बांग्लादेश में काफ़ी एक resentment भी है कि जो एक people's movement थी उसको hijack कर लिया है एक bilateral India-Pakistan politics ने. कि when I was growing up, I heard about 1971 as the third Indo-Pak war. So मैं बांग्लादेश की तो बात ही नहीं होती थी. Bengalis and ethnic minorities जो उधर हैं उनकी तो बात ही नहीं होती थी. So I think that also that these two countries, these two nuclear powers playing hegemonic politics, that is also something that gets further crystallized after 1971. Yeah. एग्जैक्टली ओके, कुछ सवाल मुझे सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले, उसमें एक बार था कि मैं आपसे ये पूछूं कि 1971 की जो ओवरऑल एपिसोड है, अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, बिकॉज यू इंटरेक्ट विद दोस पीपल एज वेल and did interviews of those who were involved in it directly or indirectly. तो उसमें एक जो ग्रैंड नैरेटिव पाकिस्तान में है, मतलब वाज इट अ मिलिट्री फेलियर और वाज इट अ पॉलिटिकल फेलियर, या कुछ लोगों के नजदीक ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से इट वाज इनविटेबल। तो इसके ऊपर आपकी जो राय है वो मैं लेना चाहूंगा। I think कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, टू पुट इट वेरी सिंपली। आई थिंक ये जो आइडिया है कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस था, हम इसके बारे में क्यों बात करते हैं, वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाई वी कीप गोइंग बैक टू दैट, एंड आई थिंक बिकॉज हम कहना चाहते हैं कि ये जो हुआ वो इनएविटेबल था, ये तो होना ही था। But I think when you treat history as inevitable, you're essentially saying कि मेरी तो responsibility भी नहीं है, मेरी accountability भी नहीं है, ना मुझे reflection की ज़रूरत है, ना मुझे history से negotiate करने की ज़रूरत है, ना कुछ सीखने की जरूरत है, right? So I find this जो inevitability का narrative है बहुत problematic है. We have to remember कि Pakistan was created because of support in East Bengal. Muslim League was founded in East Bengal, right? So what happened? What happened between 1947 and 1971? हमें उस पे फोकस करना चाहिए एज अपोज टू कि हम वो ही जो कलोनियल नैरेटिव्स हैं उनको हम फर्दर करें कि ओ ये तो नॉन मार्शल रेसेस थे, मार्शल रेसेस थी, या ये तो ब्रिटिश की वजह से अंडर डेवलप्ड एरिया था तो हमारी तो गलती ही नहीं थी। एक सिस्टेमिक पॉलिसी आपने इस्टेब्लिश की और उसको आपने फर्दर इंटेंसिफाई किया थ्रू दिस ईयर्स, जहाँ पे आपने लोगों की लैंग्वेज, कल्चर, religion, way of life, way of being, their politics, the economy, on everything you trampled upon. And that is the reason 1971 happened. And then after doing that for, 24 years, you unleashed genocidal violence by going into universities with tanks. That is why 1971 happened. So I think we need to be very careful. Yes, India was involved. Yes, India played a role, right? But India was only able to play a role because Pakistan created the environment, right? By एग्जैक्टली suppressing on people's rights. So I think जब हम किताबों में भी बात करते हैं, टेक्स्ट बुक्स में इंडिया का जो फैक्टर है वो ओवरशैडो कर देता है सब और फैक्टर्स को. And I think that's very problematic. Yes, you can absolutely engage with India's role, but you have to understand that there was a long legacy that led up एंड to what happened in 1971, एंड वी and शुड there's no नॉट introspection of that. एग्जैक्टली Yeah. एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट आवर एनिमी टू नॉट इंटरवीन व्हेन यू आर वल्नरेबल, और वल्नरेबल भी I आप mean, अपनी ही गलतियों की वजह से जब हो पार्टिकुलरली। I also think कि बहुत easily हम वो एक, because post partition जो एक चीज हुई है वो है कि आपका जो
एंटी इंडिया नैरेटिव है, वो एंटी हिंदू नैरेटिव से बहुत जुड़ चुका है, राइट? वो सिनोनिमस तरीके से हम उसको देखते हैं। तो वो जो आई ग्रू अप थिंकिंग कि ईस्ट पाकिस्तान में तो हिंदू मेजोरिटी थी। Why? Because वो नैरेटिव ये था कि हिंदू टीचर्स थे जो प्रमोट करते थे इस तरह के सेसेशनिस्ट आइडियाज, एंड बिकॉज वो हिंदू थे तो ऑब्वियसली उनकी एक एलिजेंस थी इंडिया के साथ, so therefore they were anti-state because they were closer to the enemy, right? That is very problematic. End of the day, this was a people struggle for their rights, for their basic rights, as we're seeing right now in Palestine, as we are ongoing, the movement in Kashmir that we continue to see and support. So I think if we change our perspective and are able to use the same lens for what happened leading up to 1971 and in 1971, we will be asking different questions. ओके, अच्छा एक आपने भी इंटरव्यूज किए, उसमें मोदी शमसी का भी एक इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब इस वार का क्लाइमेक्स था 1971 की, तो कराची के सिनेमा में लोग माई फेयर लेडी देख रहे थे। तो इसके ऊपर आपका एनालिसिस कि हाउ पीपल वर इनडिफरेंट इन इन द वेस्टर्न विंग, जब आपके एक विंग में आई वुड से कि हालात इस तरह खराब हो और दूसरे विंग में आप इनडिफरेंट हो। और फिर इसको कुछ लोग यूरोप के साथ भी एसोसिएट करते हैं कि वहाँ पे रीजनल इंटीग्रेशन इसलिए हुई कि उनका भी वॉर का एक्सपीरियंसेस थे बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भी वॉर के एक्सपीरियंसेस रहे। तो ये कैसी वार थी, किस तरह से लोग इनडिफरेंट थे एक विंग में, कि वो अपनी डेली लिविंग एक्सपीरियंस की वही हो रही थी, और कराची के सिनेमा में लोग मैं लेडी देख रहे थे। एक विंग में आपकी वॉर का जो क्लाइमेक्स है वो कंक्लूड हो रहा था। तो हाउ वुड यू असेस दिस इंडिफरेंस बेसिकली? It is, it's baffling, right? And एक किताब में narrative है of Colonel Nader Ali, who has recently passed away, and he was serving in the army, and eventually जब वो उधर गए, उन्होंने violence देखी, in fact opted to go to East Pakistan and fight in the war. But once he went there and he saw कि जो violence हो रहा है, जो genocidal violence हो रहा है, जिस तरह हिंदू community target हो रही है, he became very disillusioned. Eventually, when he came back to West Pakistan after seeing all that violence, and he saw that their life is going on as normal, right? पता ही नहीं है लोगों को या indifference है. It affected him so badly that he was then institutionalized, right? To just show कि वो एक stark कितना difference था for somebody who was seeing firsthand the violence and then comes back to what was West Pakistan and sees that people just are carrying on. Their lives are just carrying on. That disconnect impacted him that much, right? And I think Muniza Shamsi ji speaks about this beautifully in her piece as well that I've used in the book. I think the state machinery was powerful. I will say it was powerful, and a lot of people relied on that state machinery. And because a narrative, through the years built hota रहा था कि ये बंगालीज जो हैं वो उनकी औरतें जो हैं साड़ीज पहनती हैं, उनका जो खाना है हमारे से मुख्तलिफ है, उनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से ज़्यादा जुड़ी हुई है देन अरबिक एंड पर्शियन एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक वो सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा था थ्रू द इयर्स, एंड वही फ्रेमवर्क जब स्टेट ने इस्तेमाल किया टू से कि ये तो एक इंडियन कंस्पिरेसी है, इंडियन ट्रेचरी है, और ये जो लोग हैं जो उनके साथ जुड़ गए हैं ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, और हम नेशन की प्रोटेक्शन के लिए हम जो सारा जो स्टेट वायलेंस है वो जस्टिफाइड है, हम तो लोगों को बचाने जा रहे हैं, हम तो मुल्क को बचाने जा रहे हैं। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल swallowed that whole and digested that. And in fact जब मैं पंजाब में इंटरव्यूज कर रही थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे यही स्टोरीज बताई, उनकी जो मेमोरी थी, आपका जो पहले सवाल था, वो काफ़ी हद तक शेप थी बाय द स्टेट नैरेटिव्स. But then the people like Munisa Shamsi ji, Tariq Rahman ji, who challenged that. They say कि information available थी, there was information available. It was whether you wanted to access it or not. And I think it's very similar right now to, what information do you want to hear, whether it's to do with Palestine, whether it's to do with Kashmir, whether it's to do with Balochistan. आप कौन सी information पे rely करना चाहते हैं? So there were possibilities and there were people who challenged and who resisted. But on a whole, I would say, जहाँ तक जितने मैंने interviews किए, overwhelmingly, a lot of people just bought the state narrative. जहाँ पे मुझे variation नजर आई वो लोग थे, कुछ लोग आर्मी में थे जो उधर गए, उन्होंने देखा फर्स्ट हैंड, और कुछ लोग सिविलियंस थे जो ईस्ट पाकिस्तान में बेस थे, कुछ लोग उधर जो टी गार्डन्स थे उस पर काम करते थे, एंड दे हैड सीन दैट डिस्क्रिमिनेशन, या जिन लोगों के बंगाली फ्रेंड्स थे जिनके एक पर्सनल रिलेशनशिप था, उनको कुछ हद तक नजर आ रहा था। फिर जो इंटेलेक्चुअल्स थे जैसे आयर रहमान साहब हैं,
the late Ahmed Salim Saab, poet who just passed away recently, Tahira Mazhar Ali, people who've been involved with the Women's Action Forum. So there were those critical voices who knew what was happening. And so sometimes we allow the state to silence by relying too much on the state एग्जैक्टली for ओके, our माय protection. लास्ट क्वेश्चन, कौन से ऐसे लेसन हैं जो पाकिस्तान ने इस अनफॉर्चुनेट एपिसोड से सीखे हैं और कौन से ऐसे हैं जो हमें सीखने चाहिए? आई थिंक अनपुर मैंने जैसे पहले का जो हमने सीखा है वो तो यही है कि नेवर अगेन विल बी will we be challenged this way? And so हमारी जो सारी policies हैं on suppressing people कि है let's suppress them harder ताकि 71 कभी ना हो. हमने वो लेसन बिल्कुल नहीं सीखा कि 71 हुआ क्यों, what happened, right? So I think कि वो तो हमने negotiate करना शुरू ही नहीं किया, रिफ्लेक्ट करना शुरू ही नहीं किया, लेसन सीखने शुरू ही नहीं किया. हम तो जेनोसाइड को ही डिनाई करते हैं. हम जब जेनोसाइड का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं तो हम सिलेक्टिवली करते हैं. हम कहते हैं जेनोसाइड जो हुआ वो प्रो पाकिस्तानी इस पे हुआ, कोट अनकोट, या आपके म्यूजियम्स में एग्जिबिट्स हैं इस तरह की. सो जब हमने एक वायलेंस अनलिश किया और 50 इयर्स ऑन हम उस वायलेंस को डिनाई करते हैं तो ये लोगों पे एक सेकेंडरी वायलेंस है, सेकेंडरी तशद्दुद है, एंड ये शेप करता है बांग्लादेशी पॉलिटिक्स को, right? And Bangladeshis need to remember as well. So I think we have not learned any lessons apart from this lesson that military might must be stronger, which is definitely not the lesson that should have come out of 1971. So I think to start, we need to acknowledge what happened, and only when you acknowledge can you start to learn, reflect, negotiate, and to create a different future. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन फॉर दिस यार इंटरव्यू. Thank you for having me. Thank you.